afternoon everyone. Now we will discuss about the how to handle the problem of the simulation, in which I will speak about what are the steps to handle the Monte Carlo method. So the question is given below. यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जिसके अकॉर्डिंग अगर बात को लिखा हुआ है कि डिमांड आपको दे रखी है डिफरेंट टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग और उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी भी एसोसिएटेड है, ठीक है, डिमांड एंड द प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद दैट। अब आपको सिमुलेट करना है कि व्हाट विल बी द डिमांड फॉर द नेक्स्ट 20 डेज यूजिंग दिस डेटा। तो देखो यहाँ पे आपको 20 रैंडम नंबर्स भी गिवन है। देखो रैंडम नंबर क्या होता है, वो एक रैंडम नंबर टेबल से जनरेट होता है। तो दिस इज व्हाट द रैंडम नंबर टेबल वी हैव एंड थ्रू व्हिच वी जनरेट दीज नंबर्स। अब इसकी काफी मेथड्स है और ये जो रैंडम नंबर टेबल है एक साइंटिफिकली प्रूवन टेबल होती है जिसकी बेसिस पे ये रैंडम नंबर्स यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। अभी कैसे जनरेट करना है आपको अगर नहीं दिया हुआ है रैंडम नंबर्स तो आप जनरेट करोगे। ये जनरेट कैसे होता है, या तो फर्स्ट टू डिजिट्स या फिर सेकंड टू डिजिट्स या डायगोनल और दी क्रॉस व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। खैर इसमें अच्छी बात है कि हमें रैंडम नंबर्स गिवन है। तो करना क्या है, सबसे पहले क्या होता है, we have demand and the probability associated with that. First we calculate the cumulative probability. What I said, cumulative probability for this problem. What is the cumulative probability? 0.05 for the first, 0.05 plus 1, 0, that is 0.15, 0.30, 0.60, 0.85 and 1.0. This is what the cumulative probability है. Now, associate the tag numbers according to the cumulative probability. What are the tag numbers? Tag numbers are, this is 0.05. ये point मिला है ये. This is what 00 to 04. It's what 05 to 14. It's what 0.15 to 29. It's what 30 to 59. It's what 60 to 84. It's what 85 to 98. These are the tag numbers. इन लोगों को क्या प्रोसेस है? Step 1 for the Monte Carlo. First, identify the probability distribution for the any problem. Second step is what? Convert the probability distribution into the cumulative probability distribution. We converted. Then also fit the tag number. This is step 3. Also fit the tag number according to the cumulative probability of the XYZ problem. This is what the steps that we have to follow. These are the steps that we have to follow. This is what the W1 is. What W1. Now हमें क्या कर दिया मैंने, हमें गिवन था कि आपको 20 डेज के डिमांड को जनरेट करना है। दोनों टैग टेबल 2 it's what 20 days demand. It's what day? It's 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. Okay, these are the days we have. Now the tag numbers associated with that is given also. So what are the tag numbers? I will read it. Tag numbers are, or the random numbers are, random numbers. Random number is 10. Random number is 09. Random number is 73. Random number is 25. Which is given. देखो या तो ये given होंगे या फिर आपको क्वेश्चन के अंदर बाय डिफॉल्ट आइडेंटिफाई करते हैं। 99% चांस होंगे कि रैंडम नंबर यूजुअली गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ 33 it's what 37 54 now we have 20 now we have 48 and 05. Then we have 08. Then we have 42, 26. Then we have 89,
53, then we have 99, then we have 01, then we have 90, then we have 25, then finally we have 29, which is given. Random numbers are given. Okay. Now what will do? अब मैं एक डिमांड जनरेट करूंगा, कौन सी? प्रोबेबल डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ दिस नंबर. ठीक है, डिमांड, द प्रोबेबल डिमांड और द डिमांड, प्रोबेबल डिमांड. व्हाट इज दैट? ओके, जस्ट चेक. इफ यू टॉक अबाउट 10, रैंडम नंबर 10, अब चेक करो 10 आपको कहां दिखाई देगा, मतलब कौन सी रेंज में, टैग में 10 कहां आएगा? तो आप बोलोगे 05 to 14. इसमें डिमांड इज व्हाट? 1. डिमांड इज व्हाट? 1. 09 का दिखाई दे रहा है, 05 to 14, डिमांड इज व्हाट? 1. 73 का कौन सा रेंज आएगा? 60 to 84, डिमांड इज व्हाट? 4. 25 कहां पे आएगा डिमांड के अकॉर्डिंग? अगेन 25 लाइज बिटवीन 15 to 29, डिमांड इज व्हाट? 2. 33 lies between 30 to 58, demand is what? 3. 37 again lies between 30 to 59, demand is what? 3. 54 again 3. 20 lies between 15 to 90, hence the demand is what? 2. 48 again lies between 30 to 59, 3. 05 that is what? 1. 08 that is what? Again 1. 42 will be what? Lies between 30 to 49, demand is what? 3. 25, sorry, it's 26 again 15 to 29, that is what? 2. 89 is what? 85 to 99, that is what? 5. 53 again is what? 3. 99, that is again what? 5. 01 means what? 0. 90 is what? 90 lies between 85 to 99, hence demand is what? 5. 25 lies between 15 to 29, hence demand is what? 2. And 29 is what? Somewhere else, 15 to 19, hence demand is what? 2. This is what we calculate the probable demand for this problem. I hope that you understand. What are the steps by it? First, identify the problem. Step 2, identify the probability distribution usually which is given in the question. Step 3, convert the probability distribution into cumulative probability distribution, which I converted. Step 4, associate the tag numbers on the basis of the cumulative probability distribution. Suppose it's 0.05 to 00 to 04 is the tag numbers. Then this is the tag numbers we associate. Now the problem started. What we'll do? On the basis of random numbers, we identify the prospective demand for the futures. What are the futuristic demand? On the basis of the random numbers, we can say. Random number table से जनरेट होता है. 99% क्वेश्चन में गिवन होंगे. If it's not, we have random number table. We identify the numbers on the basis of it. Is it clear to all? I hope this question is very clear. We'll do another question, and on the basis of you can understand how to manage things. अच्छा, इसमें क्या possible था और further वो ये भी पूछ सकता था what is the average demand for this. The average is simple. Sum of all these divided by the number of days we can say. Average पूछ सकता था. तो first 10 days average पूछ सकता था, last 10 days average पूछ सकता था, middle 10 days average पूछ सकता था, highest demand पूछ सकता था, lowest demand पूछ सकता था, whatever. Got it? So this is what the entire problem that we have to handle, and these are the steps, that simple steps we can say, through which you can easily identify the problem of simulation. You can easily sort out the problem of simulation. So thank you so much. We'll do one more question in which we'll discuss the one important aspect of the simulation. Thank you.